Hello students, again I Anjum welcomes you to join the class of English Literature. Today we are going to cover up lesson number 11, which name is Gravity. It is a poem. So students, you all know about gravity, okay? And this poem is written by Santini Govindan. She is an Indian poet. She writes for children mostly. किसके बारे में लिखती है ज़्यादातर वो children के बारे में लिखती है. Now come to the poem. The poem is actually is about a child's curiosity to know something new. एक child है जो कुछ ना कुछ नया जानने के लिए curiosity रखता है, okay? And now here the poet describe her childhood experience. Poet ने अपना childhood experience बताया है और जो child है curiosity रखता है वो poet खुद है, okay? So we can say that it is an autobiographical poem क्योंकि इसमें poet ने खुद के बारे में एक childhood experience के बारे में हमें बताया है. So without further delay, let's read the interesting poem. Read a poem about an interesting concept of science. So what is the concept over here? Gravity. Of science is gravity. Yesterday at school, here the poet herself saying that yesterday at school I learned something new. Now she is telling about her experience of her childhood, that she is saying that yesterday at school, कल मैंने स्कूल में कुछ नया सीखा. It sounded so strange that I thought it must be untrue. और वो इतना strange था सुनने में, so मुझे लगा it is not true. It must be untrue. My teacher taught us about gravity, and what my teacher taught us about gravity, an extraordinary force. What is gravity? An extraordinary force that holds the universe together, जिसने पूरे यूनिवर्स को एक साथ रखे हुए हैं, and keeps the planet on course. और जितने भी planets हैं उनको उनकी जगह पे perfect position पे रखा हुआ है. It's all about because of gravity. Gravity teacher said. Teacher ने कहा gravity क्या है? Keep things in proper place, जो कि हर चीज को proper place पर रखती है. It keeps people building air and water from floating into space. ये हमेशा किसको prevent करके रखती है? People building air, water, and किससे prevent करती है? Floating into space. कि अगर gravity ना होती तो हम space की तरफ जाते होते, क्योंकि हमारा अगर एक प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता या फिर ग्रेविटी ना होने के कारण हमें क्या हो जाता, फोर्स ना मिलता हमें अर्थ की तरफ से, तो वो क्या होता, हम कहाँ चले जाते, पीपल भी हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे एयर हो या वाटर हो, सब क्या होते, ऊपर की तरफ उड़ते दिखाई देते. ओके, When you throw a ball up into the air, जब आप किसी बॉल को गिराते हो ऊपर से नीचे, ओके, ग्रेविटी मेक इट फॉल टू द ग्राउंड. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट फॉल इनटू द ग्राउंड. ये ऊपर नहीं जाती है, ओके. और अगर बॉल अप इनटू द एयर, और अगर आप इनटू द एयर ऊपर भी उड़ाते हो तो भी बॉल कहाँ आएगी? ग्रेविटी की वजह से नीचे ग्राउंड पर ही आएगी. ग्रेविटी नेचर्स इनविजिबल, इट इज इनविजिबल, मोस्ट डोमिनेंट फोर्स, एंड बहुत ही डोमिनेंट यानी मोर इम्पोर्टेंट पावरफुल फोर्स है. ओके, वर्क विदाउट अ साउंड, और जो भी वर्क होता है ग्रेविटी के थ्रू वो बिना साउंड के होता है. वी कैन नॉट सी ग्रेविटी, इट इज मोर पावरफुल, बट we couldn't able to see. Okay, and without any sound it works. Okay, next paragraph the poet is saying, after I learned about gravity, जब मैंने gravity के बारे में सीखा, I was filled with great wonder. मैं बहुत surprised थी. I was shocked. The amazing thing that gravity did really made me ponder. Ponder here meaning is to think about something carefully for a period of time. I was amazed by thinking that gravity did lot of things. और क्या powerful gravity है जिसकी वजह से हम अपने proper place पर हैं. It's gravity that makes fruits from tree fall to the ground. Gravity की वजह से ही जो fruit है अगर tree से गिरता है तो वो ground पर आता है, ना कि ऊपर जाता है. Instead of rolling into the sky, never to be found. अगर ऐसा होता है sky की तरफ जाता तो हमें कभी मिलता भी नहीं. तो here the poet is giving us example that the gravity that makes fruit from trees fall to the ground, instead of rolling into the sky, never to be found. We cannot be able to find out again. Okay, it's gravity that helps me to have a shower every day. Okay, without gravity my bath water would levitate.
and glide away. Now what is the meaning of levitate? Meaning float in the air, and glide का मतलब move away. इस ग्रेविटी की वजह से ही मैं प्रॉपर बात हर टाइम पर ले सकती हूँ, शावर ले सकती हूँ हर दिन, बिकॉज अगर ग्रेविटी ना होती तो मेरा पानी किस तरफ जाता होता, वाटर जो होता नहाने का वो कहाँ जाता, ऊपर चला जाता, लेविएट हो जाता, मीन्स it float into the air. The moon orbits around earth. Because of its gravity, the moon revolves around earth. Okay, orbits around the earth, and because of gravity's power, there's the poet is also describing us the power of gravity. Gravity grabs, yani holds rock from a passing comet to bring a meteor shower. Here meteor meaning is a piece of rock from outer space that enters the earth's atmosphere and produces a bright light as it travels. एक आपने देखा होगा एक तारा यानी जाता होता है, तो वो उसके बारे में बात हुई है यहाँ पर. I'm glad I know so much about gravity. The poet is saying that I'm so glad that I know so much about gravity. But now I'm worried too. अब मुझे चिंता भी है. I'm worried too. Why? If the force of gravity vanished one day, अगर force of gravity कभी किसी दिन disappear हो गया, चला गया, गायब हो गया, what will I do? मैं क्या करूँगी? I'm terrified. I'm so afraid that I will soar into the air. Soar meaning fly high into the air. मैं कहाँ चली जाऊंगी? एयर में चली जाऊंगी. And float into the space. स्पेस में फ्लोट करती रहूंगी. And nobody can able to find me. And land on another star in a scary cold dark place. और मैं कहाँ जाके रह जाऊंगी? On another star in a scary cold dark place. I asked Mama. I am worried because about gravity. If gravity vanished one day, what will I do? The poet is saying this. So she asked her Mama. I asked Mama about this, but she just laughed and said no, no. मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा only laughed and said no, no, it is not like that. That's never going to happen, so don't you worry. So her mama replied that ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, you don't worry about it. But I'm still not fully convinced. मैं अभी भी नहीं मानी हूँ. I'm not agreeing. I'm not convinced that, and I hope that mama is right. और मैं क्या सोच रही हूँ कि काश मम्मा right हो और जो मैं सोच रही हूँ वो wrong हो. If she is not, अगर वो right नहीं है, I can bear to think of my plight. Plight here meaning is a difficult or dangerous situation. कि मैं इस डेंजरस सिचुएशन के साथ नहीं रह सकती हूँ. सो ऐसा किसने सोचा? शांतिनी गोविंदर ने सोचा कि इफ ग्रेविटी डिसअपियर्स, इफ ग्रेविटी वेनिश, देन व्हाट विल आई डू? मैं क्या करूंगी ऐसा अगर होता है तो इससे उन्होंने अपनी मम्मा से क्वेश्चन पूछा, एंड क्वेश्चन के बाद उन्हें रिप्लाई मिला, नो दिस इज नॉट लाइक दैट, दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन. ऐसा नहीं होने वाला है. बट शी इज स्टिल थिंकिंग दैट इफ मम्मा इज राइट, दैट्स ओके. इफ मम्मा इज रॉन्ग, दैट विल नॉट फाइंड with me. Okay, so I hope this chapter gravity is clear to you all, everyone. Please make sure you all yourself read this poem again for your better understanding, and in our next class we will be continuing with the question answers and word meanings. Till then, bye bye, take care of yourself.